हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम इन लिंग्विस्टिक्स लवर्स। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को देखने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको नए आने वाली वीडियो के बारे में पता लग सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शेक्सपियरियन कॉमेडी मेनली preoccupies itself with ऑप्शन ए falsity of romance, ऑप्शन बी reality of romance, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो शेक्सपियरियन कॉमेडी mainly preoccupies itself with the falsity of romance। तो ऑप्शन ए हमारे साथ सही आंसर है। नेक्स्ट, who said Shakespeare has only heroines and no heroes? ऑप्शन ए एलियट, ऑप्शन ए आर्नल्ड, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी एलियट, ऑप्शन डी रस्किन। शेक्सपियर के बारे में ये किसने कहा था? तो इसमें से आंसर है ऑप्शन डी, रस्किन ने शेक्सपियर के बारे में कहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग revolt against the contemporary artist principles? ऑप्शन ए reality of life, ऑप्शन बी humor, ऑप्शन सी interlinking the main and subplots, ऑप्शन डी all these three। तो इसमें से आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, शेक्सपियर लेफ्ट द फॉलोइंग प्ले अनफिनिश्ड। ऑप्शन ए टाइमन ऑफ एथेंस, ऑप्शन बी कैरोलिनस, ऑप्शन सी टाइटस एंड्रोनिकस एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो सही आंसर ऑप्शन ए है, टाइमन ऑफ एथेंस। ये अनफिनिश्ड प्ले है शेक्सपियर का। नेक्स्ट, एन एंटी नॉवल इज वन इन विच देयर इज ऑप्शन ए नो प्लॉट, ऑप्शन बी नो कैरेक्टराइजेशन, ऑप्शन सी नो रिलेशंस ऑफ टाइम्स एंड स्पेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, नो प्लॉट। नेक्स्ट, which of the Shakespearean plays has no element of colonialism suggested by? Option A has an element, which of the Shakespearean plays has an element of colonialism suggestively? Option A Hamlet, option B Cymbeline, option C The Tempest, option D none of these। तो द टेम्पेस्ट में हम colonialism एलिमेंट्स देख सकते हैं। प्रॉस्पेरो अपनी ब्यूटी के साथ डेस्डेमोना मेलांडा के साथ जिस जजीरे पर रहते हैं, आइलैंड्स पर रहते हैं, तो इस में हम कॉलोनियलिज्म के एलिमेंट्स देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी ठीक आंसर है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ शेक्सपियर plays do these line figure in which of Shakespeare's plays do these line figure the lunatic, the lover, and the poet are of imagination all compact? Option A Midsummer Night Dreams, option B The Tempest, option C Twelfth Night, option D none of these। तो इसमें से आंसर है ऑप्शन ए Midsummer Night's Dream। It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Which of the following novels begins with this sentence? Which of the following novel begins with this sentence? Option A Emma, option B Mansfield Park, option C Sense and Sensibility, option D Pride and Prejudice। तो ऑप्शन डी प्राइड एंड प्रेजुडिस रिटन बाय जेन ऑस्टन, ये नावल इन अल्पास के साथ शुरू होता है। इसकी बिगिनिंग होती है, इट इज़ a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। The author of the portrait of a lady is ऑप्शन ए R.L. Stevenson,
ऑप्शन बी हेनरी जेम्स, ऑप्शन सी जोसेफ कॉनराड एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी ये हेनरी जेम्स का लिखा हुआ एक वर्क है। Who described Chaucer as the will of English undefiled? Option A Pope, option B Dryden, option C Shakespeare, option D Spencer। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। स्पेंसर ने चासर के बारे में ये अल्फाज कहे थे, द विल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द mouse trap? Sorry, what is the mouse trap? Option A play by Ben Jonson. Option B, a character of Marlowe. Option C, the name of the play within the play in Hamlet. Option D, none of these। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। ये हेमलेट में जो प्ले था, हेमलेट के अंदर उसका नाम माउस ट्रैप था। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, द नेम ऑफ द प्ले विद इन द प्ले इन हेमलेट। ये हम प्ले हेमलेट में हेमलेट ने अपने वालिद की जो डेथ हो चुकी थी, इसके रियलाइजेशन के लिए उसने ये बनाई थी। तो ये इस प्ले का नाम है। नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी? ऑप्शन ए इम्पोस्टर, ऑप्शन बी रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन सी एच जी वेल्स एंड ऑप्शन डी अल्डास हुक्सली। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, इम्पोस्टर ने ये लिखा था। Who has coined the phrase Marlowe mighty line? Option A Dr. Johnson, option B Ben Jonson, option C Charles Lamb, option D Arnold। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बेन जॉनसन ने आप मार्लो के बारे में ये फ्रेज कोइन किया था। नेक्स्ट, in which of his odes Keats wonders about the substances of the imaginative verse, do I wake or sleep? Option A ode to a nightingale, option B ode to autumn, option C both A and B, option D none of these। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ode to a nightingale। Shakespeare used for option A comic senses, option B plays within plays, option C chorus and option D none of these। तो सही आंसर है ऑप्शन ए comic scenes। Next, where has Keats expressed his dislike for poetry that has a palpable design upon us? In which? Option A in one of his odes, option B in one of his lectures on philosophy, option C in one of his letters, option D in an informal chat with his friend। तो ये उसने ऑप्शन ए सी आंसर है, उसने एक अपनी ही ओड में इसके बारे में कहा था, इन वन ऑफ हिज ओड। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टीस इलियट compares the evening of a patient etherized upon a table by using the device of a conceit। In which poem do we come across this? Option A the Wasteland, option B the love song of J. Alfred Prufrock, option C four quartets and option D none of these। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक। सही आंसर है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग।